First, yeah, lady first. Mau pindah dulu pwede ako. Oh, mau pindah. बचपन से ना मुझे शादी करने का बड़ा ही क्रेज़ था बाय गॉड। पर किस्मत ऐसी कहाँ कि कोई मेरे से शादी करे, तो इसीलिए मैं जम के दूसरों की शादी अटेंड करती हूँ। यू नो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स। If you're wondering what the fuck this is, then I think you should definitely check out my Mehendi vlog. But if you're lazy and you're like, bhai bata hi de, so I'm gonna give you a little context to what happened. So I've been getting my upper lips waxed since forever. कभी कोई कलेश नहीं हुआ. So मैंने सोचा शादी का टाइम है भाई, थोड़ा ग्लो अप भी बना लेती हूँ. वैसे जो ग्लो अप मुझे भगवान और प्यूबर्टी के दिन से मिलनी चाहिए थी वो तो मुझे नहीं मिला, पर मैंने मेकअप के थ्रू थोड़ा बहुत अपना ग्लो अप करना सीख ही लिया था. सो भगवान इज लाइक नहीं, इसको नई प्रॉब्लम्स लाइफ में देना पड़ेगी, बहुत खुश खुश होके घूम रही है आजकल. सो लिटरली I decided to get my upper lips waxed a day before the whole ceremony. Because I've been getting it done since forever, I didn't think कि कुछ तो कलेश होएगा. But turns out life अगर मेरी स्मूथ जाए ऐसा भगवान होने नहीं देंगे. So भगवान is like कुछ तो कलेश करते हैं. So that lady, she waxed the layer of my skin. So I have been roaming without a layer of my skin, or this no amount of makeup is able to cover this stupid thing. जितने मेरे लिए फोटोज खींचे थे वो मैंने सारे इस प्रोफाइल से खींचे, तो ये ऑब्वियसली नहीं आया. कट टू द नेक्स्ट डे व्हेन आई सॉ कि ये भैंचोद पूरा ब्राउन हो गया. अभी तो मैंने बोरोलिन लगा के रखा है, बट यू कैन डेफिनेटली सी इट ऑन द मेहंदी व्लॉग. क्रॉस प्रमोशन, गो एंड वॉच दैट व्लॉग इफ यू हैवंट ऑलरेडी. सो मैंने कल रात से बोरोलिन लगा के रखा है कि मैं सोच रही हूँ कि कहीं कैसे ना कैसे तो हील हो जाए, बिकॉज मेकअप से तो भैंचोद ये ढक नहीं रहा. It's okay, I do not mind. Like I said, I am not the prettiest person in the room, but I'm definitely the funniest person in the room. So let's go. We tried our level best to hide it, but let's go. Hi, ma'am. Hi. Oh, the journey was really pretty, although I forgot to take videos. But here's a little preview of how the whole setup looked like, and it was the most beautiful setting ever. Nothing makes me happier than seeing any two people come together, fall in love, and then have the most beautiful wedding ever. This wedding has taught me and made me believe in love all over again. These two had a cross-cultural marriage. They both did not know what they were doing, but at the end of the day, as long as they were both in the same boat, they were having fun. So rice is lighter than the and it's a concave bowl. At the end of the day, my priorities are pretty set. शादी मंजे good food. तो मैंने तो बहुत सारा खाना ठूसा. And this is just 1/10 of what you see. Hi. Hi. First and foremost, can I tell you, I'm so happy seeing you guys in love. Congratulations. Oh, thank you. What's the secret behind staying so fit and strong at this age? Oh, how do you say so? How both of you? How are you guys so We play fit and tennis. strong? Tennis is the key? Tennis and making love. Oh, Will I ever find true love? Will I ever find true love? yes, True you'll love? find true love. At what age? When you share At with what each age- other. No, what age will she find true love? Oh, right now. Yeah. This week. This week. After all of this. Yeah. We think you're beautiful. Oh my God, He thank took you so pictures much. of you and Mehendi, and I said, I think you have a little crush on her. He said, Oh my yeah. God, can we take a picture? Yeah. Thank you. You should show her the picture of what you took of her hair. Well, Yay. I do.
That's Ras and Kani for you, my one true pairing. I am so in love with these two people. They are such cuties. They have been dancing like this since forever. I mean, come on, look at them. I better find a husband who's gonna grow old with me and dance with me forever. धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ZNMD में ऋतिक ने वो कॉल क्यों लिया था। ये देखो, सारी दुनिया नाच रही थी और मैं यहाँ बैठ के भैंचो क्लास कर रही थी। #dentists are also doctors। तो तुम मुझे मासी क्यों बुलाती हो? क्योंकि मुझे यह महीने कहा था कि मैं मासी बुलाने की। और मासी का मतलब क्या है इंग्लिश में? मासी का आंट, आंटी, बाप, बाबा, कॉल भी दीदी। ओके क्या दीदी? दीदी दीदी मतलब हाँ जी बस। वेल, भीरू लाइफ है, बकचोदी तो होती रहेगी। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय, नमस्ते।